ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ। हे प्राणी जाग, कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो नाहिन अजू जाग, सम सुपने के हे जग जान, बिन से छिन में साची मान, संग तेरे हर बसत नीत, निस बासर पजता है मीत, बार अंत की होई सहाय, को नानक गुण ताकै गाई। महापयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जानिया, आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल में डीठा, चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं दिसे, वो परपंच कर परतन ल्यावे, सुतदारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजे, छिन छिन तन चीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा, मन कहाँ भयो तै बौरा, ऐनिस ओद कटे नहीं जाने, पइयो लोभ संग हौरा, जो तन तय अपनो कर मान्यो, और सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी, रतन जन्म अपनो ते हार्यो, गोविंद गत नहीं जानी, निमक न लीन भयो चरणन सु बिरथा ओद सिरानी, रैन गवाई सोई के दिवस गवाइया खाई, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाई, फरीदा चार गवाइया हंड के चार गवाइया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो कहरे कम, सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन, को नानक एह बिद पई तौ नहर रसलीन, जरा जीवन जो बन गया किछ किया न नीका, एह जीरा निर्मोल को कौडी लग मीका, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तपना कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पइयो, मेरी मेरी करते जन्म गइयो, कबीर सूता क्या करे बैठा रह अरब जाग, जाके संग ते बिछरा ताही के संग लाग, कबीर सूता क्या करे जाग रोई पे दुख, जाका बासा घोर में सो क्यों सोवे सुख, कबीर सूता क्या करे उठ की ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होई गो लांबे गोट पसार, जाग लियो रे मना जाग लियो कहाँ गाफल सोइया, जो तनु पुजिया संग ही सो भी संग न होइया, बीत जह जन्म या काज रे, निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान, काल तो पहुँचे आन कहा जहे पाज रे, अस्थिर जो मान्यो दे सो तव तेरो होई है खे, क्यों ना हर को नाम ले मूर्खनी लाज रे, कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा, दिन ते पहर ते करिया आव कटे तन चीजे, काल अहेरी फिरे बदिक जू कहो कवन विद कीजे, हो दिने आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका, जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे, रैन गई मत दिन भी जाई, भवर गए बग बैठे आई। Main teachings and important points. The world is temporary and illusory. The hymns repeatedly remind us that this world is like a dream and can disappear in a moment. Human beings become trapped in greed, attachment, pride, and material pleasures, forgetting that worldly possessions are temporary. People mistake false and perishable things for eternal truth. Wealth, beauty, relationships, and status do not last forever. The body itself eventually weakens, ages, and turns to dust.
The teachings urge people to awaken spiritually before it is too late. God alone is the true companion. The verses explain that while family, friends, wealth, and possessions may seem important, none of them can accompany a person at death. Only God remains the eternal support. God is always present within every being. Constant remembrance of God brings true peace. In the final moments of life, only devotion to God becomes meaningful. Guru Sahib teaches that one should sing the praises of the divine because only the divine helps at the end. Human life is precious. Human birth is described as priceless, more valuable than a diamond. Yet, most people waste it in sleeping, eating, greed, ego, and worldly pursuits. The hymns warn that childhood passes in ignorance, youth passes in pleasures and distractions, old age arrives with regret and weakness. Many realize the truth only when the life is nearly over. Attachment and greed lead to spiritual blindness. The verses criticize dishonesty, selfishness, and attachment to wealth. People earn wealth through deceit, become obsessed with mine and my family, ignore spiritual wisdom, chase temporary pleasures instead of eternal truth. Guru Sahib warns that the deceitful actions will eventually be judged and no worldly companion will stand beside the soul in the end. Society often rejects the spiritual truth. Another important theme is that the society often misunderstands spirituality. People consider worldly pleasures sweet and devotion bitter. Those devoted to God are mocked or criticized. Humanity serves Maya or illusion but ignores the master behind it. This inversion of values is presented as tragic condition of the age. Time and death are constantly approaching. The hymns strongly emphasize the passing of time and certainty of death. Every moment reduces human lifespan. Old age gradually weakens the body. Death can arrive at any time. No one can escape mortality. The repeated call is wake up now. Do not remain spiritually asleep. Guru Sahib especially stresses that one day everyone must lie down permanently in death. So one should remember God while there is still time. Self-realization and spiritual awakening. The teachings encourage introspection. Understand your true identity beyond the body. Recognize the soul's connections with God. Break free from illusion and ego. Live consciously and spiritually. Human life is seen as a rare opportunity to reunite with the divine after wandering through countless life forms. In the end, the main central message of these verses is that the worldly life is temporary, uncertain, and ultimately unsatisfying when lived only for material gain. Human beings become trapped in greed, ego, attachment, and distractions, forgetting the true purpose of life. Wealth, relationships, beauty, and even the body itself cannot accompany the soul after death. The hymns urge every person to awaken spiritually, remember God constantly, live honestly, and use this precious human life wisely. True peace and liberation come not from the worldly success, but from the devotion to God, self-realization, humility, and righteous living. The teachings serve as a compassionate warning. Life is passing quickly, so one should turn toward the divine before the time runs out. साथ संगत जी, यदि कुछ जरा सा भी कम रह गया अथवा बढ़ गया है तो हम दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अतः कृपया क्षमा प्रदान करें और बख्शने की कृपालता करें। धन्यवाद। सृष्टि में सदा ही कोई एक विरला, दुर्लभ, मर्यादित, महाजीव विशेष विद्यमान होता ही है। अतः हम उस महाप्राणी को दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक सदा ही नमस्कार करते हैं। सतनाम रमैया, रमैया सतनाम है।